Hi, this is Nahata Irani, and I have just interviewed with Amna Sani on AHI, which is one of your favorite channels. And we've spoken about very interesting things about modeling, about acting, movies, and a lot more that you would be very interested in. I hope you like it. Hi guys, I have with me today Maha Taheriani, one of the bright and beautiful young faces that I think headline style in the fashion industry in Pakistan today. She's got a few very successful years behind her, recognition, awards, all of that, and she just made her TV debut as an actor. We're also looking forward to her first film, so lots to talk about. Maha, how cool is it? We're finally sitting down for a conversation. I love it. I think it's been a while that we've seen each other. It has. I mean, It's very refreshing. it's good. It's good. I mean, I'm just loving this wave of how fashion and television have merged over the last few years. Well, that was, I think, my ideal goal. Because I have a part of me that wanted to show that there has to be a hybrid. Right. Like, you don't have to leave one thing to do the other. You can have multiple skills and do them at multiple times. So, yeah, I don't want it to be like a transition that you left this and done this. Right. You haven't left anything. उस पे आते हैं because I feel it's very difficult to balance both because the requirement is so different. As a model, you're expected to be one completely different kind of person as opposed to a TV actor. But maybe those lines are blurring as well, right? No, I feel like that you're very right about the fact that it is very, very difficult to balance things. But then I think that I've always believed that nothing in this world that's worth everything is always going to be easy. Yeah. It's always going to be the most difficult thing ever. But it's worth every bit. So Like, don't look for easy things. yeah, You right. I have to get look that. for I get that difficult about you. So Maha, sabse pehle, before we start, and for people who don't know, how does somebody with a degree in law end up as a fashion model, and in law from London, end up as a fashion model in Pakistan? Well, I was studying in London and I loved criminal law. I was majoring in that. But I loved going to theatres, and that's where a lot of people that would come because London theatres are amazing. I always loved them. absolutely. So I would go with my friends, and a lot of people there called out me and they told me that you should model, you should be in fashion, you should be screening something. And then when I came back to Pakistan, and here also I met like a couple of people. When I was at the salon, I met a designer, I met Tabish, and everybody said the same thing that I was hearing since I was doing my degree. Yeah. So then I finally decided, I was like, you know what, why not? Why not? Why do you think? आपको क्या ख्याल है? क्या नजर आता है? And we're going to be a little bilingual here. Yeah. क्या दिखता है लोगों को कि उनको लगता है कि ये लड़की को मॉडल होना चाहिए? Is it the height? Is it the figure? Is it the poise? Is it a combination? Attitude, confidence? What else? अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि लोगों की नज़रों से क्या दिखता है उन लोगों को, but as a person who is now there, Yeah. मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इंसान का कॉन्फिडेंस दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखते हैं. लाइक आई नो कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं मॉडलिंग के हर मुल्क में, हाइट एंड कलर एंड हेयर एंड दिस एंड दैट, बट आई ऑल्सो फील कि हर कल्चर के लोग अलग हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड बना ही नहीं सकते. देयर शुडंट बी वन. जो मैं देखती हूँ वो मैं देखती हूँ दैट हाउ पर्सन वॉक्स इन. Right. जब कोई इंसान किसी कमरे में घुसता है तो वो उस जगह की रोशनी ले लेता है. आई थिंक दैट्स व्हाट यू सी. आई रोशनी थिंक ले लेता है. Interesting. a That's an person interesting. becomes the light of that room. Yeah. और लोग मुड़ के देखें और याद भी रखें. उसका आई थिंक खूबसूरती से भी बहुत कम ताल्लुक है, हाइट से भी बहुत कम ताल्लुक है, बिकॉज बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं. खूबसूरती तो बहुत subjective है, right? Yeah. एक चेहरा किसी को खूबसूरत मैं लगता बहुत है. सारी जगह से गुजरती हूँ and I see that somebody is so beautiful, Yeah. but it's not that. It's the way, the confidence and the body language they have. I think Yeah. that's what makes you a model or a person that's worthy of screens. Absolutely. So you got into the industry, you started modeling, and you became very successful very quick. Yeah. With hard work and, the fact that you were so good. Yeah, it was pretty speedy and it was pretty unexpected. Because I was, I think till now also, I was a pretty geeky, nerdy person. So none of my friends wanted to believe that I would be considering something like that.
But I think it was theory. I think I believe that God writes something for you. Did you have to change anything about yourself or your life before and after coming into modeling? I think the only thing that changed was my sleep routine Sleep routine. and my exhaustions, No. obviously. Where? But I didn't have to change anything. I Right. think I came from a mindset and a family where I had always believed that no matter what I'm doing, I have to be accepted for who I am. Right. So, वहाँ you've studied law and criminal law at that. तो मैं अब oath taking ceremony कराती हूँ ना कि हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे. कहेंगे, या जो सिर्फ कहेंगे सच सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. How easy or difficult is it to be in the modeling industry, in the fashion industry in Pakistan today? I think that really depends on how we define modeling these days. I would kind of want to, मैं इस सवाल को तीन Politician में भी हो तीन माँ, layers में- politician भी हो. तीन लेयर्स में डिवाइड करूंगी. हाँ. आई थिंक क्योंकि हमारे पास एक एरा है जहाँ पे हम देखते हैं कि दैट्स एन अनबीटेबल एरा ऑफ मॉडल्स. हमारे पास एक एरा था जिसमें विलीजे थी, जिसमें इरज थी, जिसमें नेहा थी, एंड दे वर सुपर मॉडल्स. और हमारे पास अभी भी ये एरा है इंटरनेशनली. बेला हदीद एंड एवरीबॉडी दे मॉडल्स. आमिना इलियास एंड आई थिंक वो मॉडल्स हैं. तो जो दूसरी लेयर है मुझे लगता है कि जो हमारी कमर्शियल सेंस में आती है वो मॉडलिंग नहीं है. दैट्स नॉट अ पावरफुल विनीजे और an Iraj or a Neha. Right. That's a pretty girl. Yeah. But she can be named as a model. I'm not saying that she doesn't have it. But she doesn't get the chance to feel like a model. Right. To go international and to do things Right. that we've done. हाँ. So I think उन दो हिस्सों में मॉडलिंग हमारे यहाँ डिवाइड हो गई है. हाँ. But all in all, I do think कि competitiveness obviously है, हाँ. जो कि नहीं होनी चाहिए. I feel like मॉडलिंग इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब मॉडल्स साथ मिल जाए. सो जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री की, और जो सवाल मेरा तो गोल कर दिया बीच में, तो पॉलिटिशियन तो बहुत अच्छे इलेक्शंस में खड़े होने के पूरे चांसेस हैं. सवाल ये था कि जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हम वी टॉक अबाउट ए पे स्ट्रक्चर, हाँ राइट? And you're somebody who's very, very openly complained about that. हाँ Then we talk about inclusivity. हाँ. कि हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री क्या अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन को एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही. दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ है डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म. क्या है ऑन सेट? टाइमिंग्स फॉलो होते हैं सेट्स पे? यू नो, आर द इजी सेट्स टू वर्क ऑन? आर पीपल इजी एंड प्रोफेशनल टू वर्क विद? हरासमेंट है कि नहीं है? बिकॉज हर थोड़े हम महीनों बाद कोई ना कोई किस्सा ज़रूर आता है हरासमेंट का, where women say that they don't feel safe working in fashion in Pakistan today or anywhere in the world. ये सारा चल रहा है. ये सब कॉन्वर्सेशन सब कॉन्स्टेंटली हो रही हैं. हाँ. पाकिस्तान में कितनी सच्चाई है? बिकॉज जिसके साथ भी बैठो वो कहता है लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ. Acha, I'll start from your first question. This is 4 questions together Okay. because I'm a lawyer, so I remember Yes, things. yes, good. I think pay structure, yes, I would definitely say बहुत सारे problems हैं. There is a certain ego dominancy of designers also, and I think when you're new, there's a certain power dilemma also, जो कि काफी real है. And I think now from the point that I'm talking about, obviously मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मेरे साथ नहीं है. Yeah. Because nobody can do that to you. But Yeah. I also think कि थोड़ा part जो है हमारे यहाँ education भी play करती है. Like as a lawyer, I've always had contracts Right. that this is what you're going to pay me, this is when you're going to pay me, this is how you're going to pay me. Right. Because I worked internationally. The Right. first time I worked was for Dior, Right. and then I worked for Balmain. For dear. Yeah. I was actually picked out in London in theatre. Wow. It was a very small thing, but Huh. yeah, it was cool. I was young. Nice. Yeah. Oh, But not many that's people what know I that. felt that people Yeah. have NDAs, they have non-disclosure agreements, then they Yeah. have their payment, agreements. जो कि yeah. हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं करती. Yeah. Just for the क्यों नहीं sake of करती? के पता नहीं. WhatsApp पे आप किसी को फोन कॉल करके कल्चर नहीं है. You're in an educated environment. I think हमारे यहाँ अभी चीज स्टार्ट हो जानी चाहिए. हाँ. It's not about कि आपको पूरी दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो पे नहीं करना चाहते. Yeah. कौन पे करना चाहता है? हाँ, जो अगर आप कोई पे नहीं करना चाहता. हाँ. लेकिन प्रोफेशनलिज्म तब आएगा जब आपकी साइड से भी कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म हो. You give them an idea that you will work in a way that is entirely professional. Make them bound to your conditions. Right. Even to your cultures. I think बहुत सारी लड़कियां जो complain करती हैं कि मुझे ये नहीं comfortable पहनने में या वो Right. नहीं. Write it down so Yeah. people know. Yeah.
so that problem goes away from sets. बिल्कुल ये मेरा बिलीफ है, हाँ जो कि मुझे लगता है कि लोग नहीं फॉलो करते हैं। हाँ मतलब सेट पे आके ना कहें कि मैंने ये नहीं करना ये नहीं करना, पहले से आप पेमेंट क्लैरिटी दें. स्ट्रक्चर्स आप उनको ये आइडिया ना दे that you are somebody that can be played with. Right. You're not. Right. If you're a supermodel, you're not. Yeah. You should be valued as a supermodel. Yeah. It's not just a tagline. मुझे लगता है पाकिस्तान में एक मसला है कि supermodel का tagline है, but बहुत सारे supermodels cannot respect themselves or value themselves enough. So why would you be valued? Or maybe अगर आप सुपर मॉडल तक नहीं भी पहुंचे, just as a model, nobody should take you for granted, right? एक professional Nobody. yeah. Nobody should take you for granted. Even if you're starting out, there should be legal agreements. Right. Agencies क्योंकि नहीं है to look out for Agencies नहीं है, but I think कि इतनी education जो है वो generally हर जगह है. That you should know that even if it's a drafted document, all you need is a signature. Right. So that's one. Payment issues here, and yes, I've called out people on that, but I think my calling out was more towards your answer actually lies into the comments that came, हाँ into the screenshots that came, हाँ and they were saddening, Yeah. they were astonishing. yeah. तो मैंने किसी को कॉल आउट किया, लेकिन उसका जवाब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सही था या गलत था, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जवाब आपके सामने है, मैंने नहीं दी जवाब. क्या जवाब था? लोगों ने दिया. हाँ आप कमेंट सेक्शन देखें, आप उनके डिजाइनर्स देखें, आप उनके एम्प्लॉइज देखें, and that's what the reality is. right So that is an answer that I don't even need to speak about. right. जहाँ तक बात है, again, you come down to harassment. हाँ Now, harassment is a very, very, I think, sensitive topic. Yeah. But I'm not going to say that we don't have predatory behavior. We do. आपने फिल्म बनाई है उस पे. Yeah. But also, I think predatory behavior, being a person who studied in London, being a person who's been, who runs a law firm, yeah. and as a lawyer, I think predatory behavior हर फील्ड में है. ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ फैशन फील्ड जो है उसको या एक्टिंग फील्ड को या शोबिस फील्ड को आप टैग कर दें कि predatory behavior है. And you don't think that young models are more vulnerable to the predatory behavior? नहीं. I think that women in general, They are. Yeah. they are vulnerable. Yeah. बैंक में काम करने वाली औरत, एक लॉ करने वाली औरत जब कोर्ट में घुसती है तो Absolutely. सबसे पहले उससे सवाल पूछा जाता है कि आप सीनियर लॉयर हैं या आप जूनियर लॉयर हैं, Very well put. और Yeah. आपको बताना पड़ता है कि मैं फर्म की ओनर हूँ. आपको यकीन आए या ना आए. हाँ. तो ये predatory behavior जो है ये हमारे कल्चर के अंदर engraved है. Wait, did I catch that right? You own a law firm Yes. here in Pakistan? Wow, amazing. That was one of my goals. One of my Learning things today. Huh. Amazing. But that's what I think कि harassment जो है वो हर जगह होती है, और harassment दो हिस्सों में जाती है. एक तो obviously simple जिस तरह हम define करते हैं कि भाई हमें harass किया गया है through touching us inappropriately. लेकिन I think harassment उससे बहुत wide है. The word goes very wide. Harassment behavioral हो सकती है. एक औरत जब किसी बैंक में नई तरीके से काम करना शुरू करती है, उसके साथ behavioral changes होते हैं, उसके साथ बहुत और किस्म की weird चीज़ें होती हैं जो उसके अराउंड बाकी एम्प्लॉयज़ में नहीं हो रही होती. टू बिगिन विद वो कभी उस जगह पे फिट नहीं कर पाते, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो कोई भी किसी भी नई जगह पे जाए. तो मुझे लगता है कि harassment एग्जिस्ट करती है, बट आई वुड वांट टू टेक ऑफ द टैग अवे नाउ फ्रॉम शोबिज ओनली, Of course. क्योंकि of course. harassment आपके मुल्क की हर फील्ड में एग्जिस्ट Of करती course. और मैंने दुनिया की हर फील्ड में एग्जिस्ट करती है. लोग है. आपको प्रेडेट करते हैं या आपको इंटिमिडेट करते हैं, और उनका आपका रिस्पॉन्स चाहिए होता है या तो कि आप गिव अप कर दें, गिव इन कर दें, या आप उनसे फेवर ले लें. इट्स इन ऑल वेज पॉसिबल. जो क्या? बहुत ज़्यादा प्रेडेटरी होते हैं वो आपको ऑब्वियसली अब्यूज़ भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है. बट आई थिंक दैट देयर इज अनदर पॉइंट टू इट, दैट यू हैव टू मेक अ पॉइंट व्हेन यू वॉक समवेयर. Yeah. एज अ वुमन आई थिंक कि अगर आपका मुल्क के लोग इस तरह के हैं या सोसाइटी इस तरह के प्रेशर्स हैं, तो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ टू नॉट मेक अ स्टेटमेंट. Right. Make a statement. Talk about it. When you walk into a set, you should not look like you're a vulnerable woman. You should look like that you are not a vulnerable woman. Yeah. Yeah. If you have a behavioral problem, I don't need you. You can walk away Yeah. and I can leave the work. Right. Make your own self-respect. But I'm very interested that as a lawyer you would be able to answer this. क्या harassment को कोर्ट में प्रूव करने का कोई तरीका है? Because हम सब ये कहते हैं कि जी harassment कोर्ट चली जाती है, लेकिन उसको कैसे कोई प्रूव करे? कोई औरत कैसे प्रूव करे कि मुझे किसी मर्द ने या किसी इंसान ने हरास किया है?
देखिए पाकिस्तानी कोर्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली तो कितनी ये थोड़ा सा वो बायस भी होना है, पड़ेगा मुझे थोड़ा सा बायस होना पड़ेगा मुझे वो ये कि हरासमेंट बहुत बिल्कुल जा सकती है कोर्ट बाय फेयर मीन्स जा सकती है और हरासमेंट प्रूव भी हो सकती है कैसे अगर कोई लेकिन एविडेंस हमारे होता नहीं मुल्क में क्यों ये मुश्किल है मैं उसकी वजह बता हाँ। सकती हूँ वो इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में एब्स्ट्रैक्ट ओपिनियनल चीज़ें जो है ना वो एविडेंस नहीं मानी जाती प्लीज एक्सप्लेन जैसे कि किसी का प्रेडेटरी बिहेवियर अगर रेपिटेटिवली हुआ गया है हाँ। किसी ने बोला है और उसके बाद फॉलोइंग 4 लोगों ने बोला है ठीक है या उसके बाद जो है वो बंदा उस चीज़ को ना रिलेंट कर रहा है ना रोक रहा है और आप ये भी पैटर्न नोटिस करते हैं कि उसने किसके ऊपर हरासमेंट करी है यूजुअली हमारे यहाँ वीकर व्यूअर मोर वल्नरेबल लोगों पे हरासमेंट ज़्यादा होती है उस पैटर्न को भी नोटिस किया जाता है पर ये सब पाकिस्तानी कोर्ट का मामला नहीं है क्योंकि ये सब जो है वो रिकॉर्ड तो नहीं किया जा सकता नहीं एग्जैक्टली तो इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव हरासमेंट बट आई डोंट थिंक दैट वी शुड स्टॉप देयर मतलब हमारा तो कोर्ट कहता है कि रेप के भी 2 हमारा गवाह जो होने जज चाहिए होगा भाई साहब वो जब जज को हरासमेंट का मीनिंग नहीं पता तो हम लॉयर्स उसको कैसे समझाएंगे जब जज साहब को नहीं पता तो आई थिंक कि इट्स अबाउट टाइम कि आप इसकी मीनिंग को वाइडन करें और आप इसके केसेस रिपीटेटिवली लाएं ताकि लोग मजबूर हों जो हमारे ऊपर लोग हैं जो जजेस हैं उनको पढ़ना पड़े इस बारे में उनको समझना पड़े कि हमें कोई ना कोई फैसला देना पड़ेगा और हर दफ़ा फैसला एक तरफा नहीं हो सकता और हमें फैसला ढूंढने के लिए पैटर्न्स बिहेवियर्स वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती विटनेसेस लोग ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी तो आई थिंक दैट चेंज इज इनग्रेव्ड अमंग्स वो जो बिल्कुल टॉप टियर है उधर से आता है So Maha, you have a law firm. Do you go to court here? Well, I was practicing in the early times, but then I did not get time enough. Obviously. So I became a saving partner to it, but I'm very invested in some pro bonos. Right. And yeah, then life got me into acting and modeling and no time. And no time. So talking about harassment, आपकी जो film का trailer आया है, which is of course जामुन का दरख्त, written by the fantastic Beagle and directed by Rafi Rashdi. दोनों ऐसे नाम हैं who do like very extraordinary projects. Absolutely. The film is about, it seems to be about harassment. And you are featuring in it with one scene saying, please don't touch me, और जो story मैंने सुनी है, it is very bold. It is about the fashion industry. और उसमें we see Fawzia as well, another model. So is it like from the industry, the story has been taken from the industry? Tell us a little bit about the story. The story is fictional. The story has been Beagle writes from inspirations. Yeah. वो किसी की कहानी नहीं है हाँ. कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों की छोटी छोटी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन वो किसी एक इंसान की पूरी कहानी नहीं है और अगेन आई थिंक फैशन इंडस्ट्री जो है वो उसमें एक एग्जाम्पल है अगर उसको वाइड मीनिंग में देखा जाए तो आप उस फैशन इंडस्ट्री को बैंक भी सोच सकते हैं कोर्ट भी सोच सकते हैं रेस्टोरेंट में वेट्रेस भी सोच सकते हैं लेकिन फिल्म तो फैशन इंडस्ट्री पे हमने उसको एग्जाम्पल में इस तरीके से दिखाया है क्योंकि वो लोगों के लिए समझना आसान है राइट जिस तरह आपको लोगों को समझाना होता है तो उसके लिए वो समझाना आसान है द फिल्म इज अबाउट harassment, yes, one part of it, but the film is a little bit more than that. It has a wider meaning. It involves power dilemmas. Okay. It involves how power dynamics can make you vulnerable. It involves mistakes. And it also involves that we have a problem in our society that mistakes we do not get a do-over. A vulnerable woman who faces a power dynamic behavior or a place that has a power dilemma, she doesn't get a redo. Yeah. मौका नहीं मिलता उसको दोबारा मौका नहीं मिलता to redo it because by the time she understands, people say that you've already made the mistake. Mistake, yeah. Can't help. So, yeah, I think that's the wider meaning of it. It is about a lot of things. And if she takes a stand, then that's another whole story of her fighting and why did she first even let it happen, all of those things. Right. So was it a difficult role for you to agree to? No. No. I think that to me it represented a lot of women that I've known. Yeah. Partially a person that I am today as a woman. Some cases that I've seen for women. So in that one role, I felt like a lot of women were in my brain. Right.
Yeah. नाम भी बहुत खूबसूरत है. बिल्कुल ऑफ कोर्स लिखती इतनी हसीन तरीके से हैं. इट्स सो मेटाफोरिकल कि जामुन का दरख्त जब जामुन गिरता है तो अपना दाग जहाँ जहाँ गिरता है वो छोड़ देता है, वो दाग उतरता नहीं है. सो आई थिंक यही मतलब है. कॉन्सेप्ट उसका यही है कि हमारी सोसाइटी में जब दाग लगता है तो उस स्टेन को रीडू करने का कोई चांस नहीं आ जाता है. हम सिर्फ सामने वाला दाग देखते हैं और हम उस दाग में फंस जाते हैं. हम जो जैसे ये टेबल सफ़ेद है, अगर इस पे कोई दाग लग जाए तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा. कोई ये नहीं देखना चाहेगा कि वो बाकी पूरा हिस्सा सफ़ेद है, वो पूरा हिस्सा क्लीन है. वही नजर आएगा, दाग ही वो नजर जो आएगा. एक चीज़ हम घिसते रहते हैं सबको सिर्फ वो नजर आएगा. एंड आई थिंक उसके लिए पूरी मेंटालिटी चेंज होने की ज़रूरत है. यू हैव टू give people chances Yeah. to learn. So the film, we don't know whether it's going to release in Pakistan or not, but it's going to do, I hope, the festival circuit, right? Later this year, hopefully, Yeah, inshallah. it is actually in the festival circuits as we speak. Right. And we do plan some OTTs also. We're not sure about how our censor board will take it. Yeah. But I think that's a better question for our producers and directors. Absolutely, Yeah. absolutely, absolutely. So you say that, coming back to you as an actor, you say it was easy to make the transition from modeling to acting? I wouldn't say that anything is easy in general. Obviously, you have to learn the aesthetics, you have to learn the angles, you have to learn different things that work out, because everything is a very, very different work. But also, I have always had a very overwhelming talent. Like, I think, remembering me from my 18 years old, I wanted to do law. I wanted to learn Kathak. Yeah, I which wanted you to did. learn deep sea diving. Which you did. And then I wanted to model. Then I was acting. So my aim has always been an overwhelming balance. Adventurous चीजें spirit ज़्यादा है. होनी चाहिए और आज टाइम तक कम सबसे पड़ता है. adventurous चीज क्या की है? सबसे adventurous चीज मैंने Because क्या you की seem है? like a very adventurous I person. feel like my first dive would be a very memorable, the most adventurous dive, because it was in Maldives when the licensed one, and I wasn't ready for that deep of a dive. Okay. But I insisted because I was very eager to see the world below the water. And I think that I realized why I was, because जब मैंने water bed पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा तो मुझे दुनिया के ऊपर का और दुनिया के नीचे का फ़र्क बड़ा समझ में आया. मतलब जो serenity वहाँ पे है, it's not like those fishes and all of those creatures. They're like us. They talk. They have communication. Yeah, of course. But they have a very, of course. They have a very united front. दुनिया का जो शोर है वो जब खत्म हो जाता है तो पता नहीं क्यों उससे मुझे बहुत मोहब्बत है. So then I got addicted to it. And so you go regularly. I don't anymore. Well, I mean, when you have time, now whenever I get you're the like time. super busy. Yeah. अब तो वैसे भी अब summer आ रहा है तो launch season भी है. And then your first drama is on air these days. No, the first drama is on air. The second I'm already working Tera on. Vada. Yeah. Which is a soap, right? It's coming every day. It is a series. It's a soap. So, and now I haven't seen all of it, of course, but जो मैंने देखा है, जो हानिया का character है, वो कोई vulnerable सा ही लग रहा है मुझे. तो मैं जब भी लगाती हूँ हानिया रो ही रही होती है. तो मतलब कि ये महा से हानिया तक का सफर जो था, I think हमारे ड्रामों में ज़्यादातर औरतें रो ही रही होती हैं. पर वो इसलिए भी क्योंकि शायद हमें उसकी डीपर मीनिंग देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे ड्रामों से लोग रिलेट करते हैं, हमारी ऑडियंस वो औरतें हैं. तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो ड्रामे क्यों देख रही हैं वो औरतें, और वो रिलेट क्यों कर रही हैं. क्या वो रो रही हैं इतना जितना हम ड्रामों में रो रहे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है. नहीं, सोचने वाली नहीं है महा, इसलिए कि बंदा देखे वो रिलेट इतना क्यों करती है. वो रो रही है ना, वो खुद भी रो रही है. उनके साथ कुछ तो सप्रेशन है. वो रिलेट करती हैं उस चीज के साथ. But for me as a transition, I found it very interesting. Yes, for sure. It was very different for me, but also it was kind of a relief from fashion, because it was, I would say it was the regular me. I got to be a regular me, my look-wise, because fashion is very glamorous and it doesn't give me the chance to be me, like I'm at home. Was it difficult for you कि कोई wardrobe दे दे आके, कोई और hair makeup कर रहा है, you have no control over the way you look, the way you sound on television? नहीं. No. I was never conscious about what I would look like. I've always believed that your skill talks a lot. Like in modeling also, I think the day I started believing that it's not about who is the most prettiest. It's about who is the most confident and who is the one that has a body language that will speak tons and amounts. Right. So as a model, you of course are established, very successful. You've got the awards to show for it. As an actor,
आपको कब लगेगा कि अच्छा भाई मैं आई एम सक्सेसफुल? That's something I wouldn't even think of. You finally found a question, Amna, that I would be thinking for. Well, I don't think that there's a limit. I don't want to set a limit. नहीं, but अपने आप को कब लगेगा? Will it be when you look at yourself in a I role think and मुझे say कि तब लगेगा अच्छा जब मुझे लग रहा है, खुद को लग रहा है? मुझे हमेशा लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ जिंदगी में वो अपनी आवाम की वजह से, people that love me, they have made me. तो जब वही आवाम मुझे उस चीज़ के लिए इतना पसंद करेगी कि मुझे वो हज़ारों की आवाम में दिखेगी, तब मुझे लगेगा कि मैं जीत गई। क्योंकि मुझे लगता है कि इस मुल्क में लोग बहुत बहुत दिल से प्यार करते हैं। जब वो प्यार करते हैं आपको तो बहुत दिल से प्यार करते हैं। तो अगर आपसे उनका दिल जीत लिया और वो हज़ारों की आवाम पे खड़े हुए तो आप जीत गए। आपको पता है ना कि आवाम का दिल कौन लोग जीतते हैं टेलीविजन पे? मुझे पता है कि आवाम का दिल कौन लोग जीतते हैं कौन सी टेलीविजन पे, लड़कियां, लेकिन किस टाइप की लड़कियां आवाम का दिल बिल्कुल जीतती बिल्कुल हैं? मुझे पता है, पर आई थिंक कि सिर्फ एक किस्म की लड़की हमने बना दी है। एंड आई हैव कम हियर टू बी द हाइब्रिड। I do feel that this is a good time for hybrid because थोड़ी acceptability भी बढ़ रही है। younger actresses जो आ रही हैं वो ज़रा सी निडर in a good way हैं, वो बहुत ज़्यादा conform नहीं कर रही। वरना आवाम को तो एक जो मॉडल है ना कि एक बहुत ही पाकीज़ा लड़की जिसका पूरा जिस्म ढका हुआ हो, जिसने सर पे दुपट्टा लिया हो, जो जी हजूरी करे, हाविन को कहे आप मेरे मजाजी खुदा हैं, सास को कहें कि मेरे पे जुल्म कर लो, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ, जो बर्दाश्त करे, जिसकी बर्दाश्त की कोई हद ही ना हो, उन लड़कियों से तो मोहब्बत है आवाम को, मोहब्बत। देखिए, जिस पहले पार्ट से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसकी कल्चर की खूबसूरती है पाकीज़ा औरत, उससे मुझे कोई मसला नहीं है। एक ढकी हुई औरत या एक दुपट्टा पहनने वाली औरत बहुत खूबसूरत औरत है। हम उस कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करके अपने लोगों को हर्ट करके क्या करेंगे? उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं मुझे लगता। मैंने भी कन्फर्म किया इस कल्चर को। मैं लंदन में रही हूँ, लेकिन इट्स लाइक जैसा देश वैसा भी। यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं उनके कल्चर को क्यों डिसरिस्पेक्ट करूँ? तो उस लड़की से मोहब्बत तो ना बिल्कुल बनता है, जायज़ है, वो अपनी सी लगती है हमें। लेकिन जो दूसरा हिस्से पे जहाँ पे आई हैं आप, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, आई थिंक वो लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि उससे उनको अपनी पुरानी यादें याद आता है। हमारे यहाँ जिस तरह शादियाँ हुई हैं या जिस तरह औरतों ने कन्फर्म किया है अपनी ससुरालों में, जिस तरह उनके साथ प्रेशर डाला गया है बच्चे पैदा करने के लिए, जॉब्स छोड़ने के लिए, लेकिन वो इसलिए मोहब्बत नहीं करती कि वो लड़की वो है, वो इसलिए मोहब्बत करती है कि वो लड़की ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, शादी करने के बाद मैं आपकी कहानी सुना रही हूँ। तो वो भी किस्म की बड़ी खूबसूरत मोहब्बत है, ठीक है। वो मोहब्बत इसलिए पैदा होती है कि वो देख पा रही होती है कि शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जगह पे वो कर रही है हमारे, ठीक है, वो हमारी कहानी बता रहे हैं। It's very mature way of seeing it कि ठीक है, वो है, वो भी है, लेकिन ये भी है कि अगर स्ट्रगल के साथ सर्वाइवल भी दिखा दें तो बड़ा अच्छा है। I think दिखाया जाता है अब। I think the new generation is there to experiment. Yes. And they are. Like my drama role has been very different from what I did in my debut film. Right. They're two very very separate girls. Absolutely. तो मैं दोनों चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि मुझे पता है दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। मैं एक चीज़ की तरफ आंख बंद नहीं कर सकती। इसलिए मुझे लगता है कि वो सबकी कहानी है, हर इंसान की कहानी है, और मैं हर इंसान की कहानी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। Right. So what are we looking forward to now for the rest of the year for you? I know you're very busy, लेकिन मॉडलिंग ज़्यादा है, कोई ड्रामे और हैं पाइपलाइन में, क्या सोचा? Well, I am already doing the second one. Already doing second? Yeah. Shoot? Yes. चल रहा है? Yeah. Want to tell us about it? Well, a little. that one's Irene's. Okay. And Dara Sejay is the producer. हाँ. I wouldn't reveal the character too much, but I would say that when I say hybrid, it's again going to be another different woman. Right. Another different character, because that's what I want to do. Right. I think जब आपने कहा था कि क्यों आवाम को मोहब्बत होती है, I think आवाम को हर कैरेक्टर से मोहब्बत होती है, क्योंकि हर कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। Okay. आवाम पे बहुत बोझ है सर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम ने भी तो है, मैं भी तो आवाम हूँ, हमारी जवान जो लोग हैं वो भी माइनॉरिटी और उनकी भी कुछ स्ट्रगल्स हैं, जो यंगर लोग हैं जो नहीं काम करते, ठीक है, उनकी भी कहानी है, उसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। हाँ, नहीं मैं आवाम को बिल्कुल पुट डाउन नहीं कर रही, लेकिन मैं तो ट्रेंड्स बता रही हूँ कि आवाम पर मतलब है कि हिस्टोरिकली एक सर्टेन टाइप पसंद आता है। There's a reason why fair girls are cast widely in the dramas and darker skinned. It's changing. I do think that it's changing, but I think it comes down from a very long time.
I Yes, think yeah, I take absolutely. it as a joke because I heard it from someone, conversation, not someone, my mother, who I idolize a lot. And she used to say कि ये हमारे अंदर था नहीं, ये जब बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट yeah. जब बड़े सगीर में बुरे आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स हम में डाल दिया. वो खुद इसलिए आए क्योंकि उन्हें हम में खूबसूरती दिखी, लेकिन वो हमें इस दिमाग में छोड़ गए कि हम सोचते रहे कि सिर्फ वो खूबसूरत है, और हम आज तक कोशिश कर रहे हैं उनके जैसी बनने की. बिल्कुल सही, कितनी अच्छी बात की है. जबकि उनको हम अच्छे लगते हैं. हाँ, हम अपने आप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. हाँ. जब हम शुरू करेंगे कि खूबसूरती जो है ना वो हर जगह अलग होती है, तो वो ज़हनियत जो है वो अभी नहीं बनी, वो तब से बनी हुई है. Of course, of वो course. डाल गए हैं हम. बहुत खूबसूरत बात की है आपने. शुक्रिया. बहुत खूबसूरत बात की है. Wow, lots of hopes from you and your projects. I'm looking forward to the iDreams project as well. Looking forward to the film. I hope कि festival circuit पे जाए, लेकिन OTT पे release हो ताकि हम भी देख सकें. Absolutely. Certainly looks very promising. And I love the balance between fashion and television because मेरे ख्याल है कि boundaries खत्म हो गई हैं, lines blur हो गई हैं, people have become more adventurous. कुछ फैशन अपना अच्छा देगा टेलीविजन को और कुछ टेलीविजन अपना अच्छा देगा फैशन इंडस्ट्री को. And I think it's दोनों की about चाहिए. time that I feel like बिल्कुल. fashion should be valued also as much as entertainment. मुझे एक Absolutely. difference ये भी लगता है Absolutely. जो नहीं है हमारे हाँ, में. जिससे हाँ. मुझे लगता है कि I think one point that I would highlight कि हमारे रैम्स मुझे जितने पावरफुल लगते थे अब नहीं लगते, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी फ़र्क है. आप पेरिस फैशन वीक आइडियलाइज करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि उस पर एक सुपर मॉडल चलती है, और जब वो चलती है तो वो चलती है. एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट रखो, एंटरटेनमेंट को रैम्स पे नहीं लाओ बिकॉज वो फैशन है. फैशन की एक अपनी खूबसूरती, एक अपना पॉइज है. दोनों को सेपरेट रखो और दोनों को जिंदा रखो. और इससे पहले कि लोग ये कहें कि हम कह रहे हैं कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फैशन में ना आए, हम ये नहीं कह रहे. हम कह रहे हैं कि जब एक इंडिविजुअल जब फैशन में आए तो फैशन को समझ के आए. जैसे हम आगे प्रोफेशन में आते हैं तो Exactly. एक्टिंग को समझ के आते हैं. एक्टिंग को समझ के आ रहे हैं. You're not coming हम in as आपकी a कला की model. कदर करके आते हैं. तो बिल्कुल. आई फील लाइक दैट Yeah. हमें दोनों चीज़ों को बहुत जिंदा रखना ज़रूरी है, Yeah, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट. Yeah. But we don't see, we want to see actors and actresses on the ramp. We want to see We want to models. see everybody. Everybody. Just in that theme. Yeah. That'll and be that- nice. Yeah, absolutely. I hope ये बात convey हो जाए और समझ आ जाए. But Maha, lovely talking to you, delightful. Oh, You're lovely a talking. very good lawyer. I have to say, I would love to see you in court. And I would love to see you, presenting your case in court because obviously you've got the gift. And Thankful. looking forward to seeing you on television, film, more of your modeling projects. And as always, It was lovely talking to you. I think the last time I saw you was a very long time. very long time. Yeah, अब Yeah, shows भी नहीं इतने होते तो अब इतनी No, but it was refreshing. I think Yeah. I took yours because I really wanted to see you. It was good. absolutely. And I'm so happy you did. Thank you so much. Na?